स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप पढ़ भी रहे होंगे समझने के साथ साथ। यही वक्त है, इसको पढ़ लें बेटा, समझ लें, टाइम बिल्कुल अपना ज़ाया ना करें। पिछला जो हम लोगों ने पढ़ा था उसको भी थोड़ा सा देख लेंगे। आज मैंने जो है वो लेक्चर 5 आपको देना है और बताना है। और पेज नंबर आपकी बुक का जो है वो जो है हमारे पास यहाँ पे 12 और 13 है। इसमें जो है इसे पढ़ने से पहले आप लोगों ने पढ़ा था सारा पिछला। हम कहते हैं कि जी टर्गर है, डिफाइंड टर्गर, ट्रांसपायरेशन और इस तरह से। और फिर हमने पढ़ा था ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, उससे ही ये रिलेटेड है कि स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट जो है इसमें अगर आप देखते हैं तो इसको हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, क्योंकि इसमें 2 ऑरिकल्स हैं और 2 वेंट्रिकल्स हैं। ठीक है। अच्छा, आज बेटा स्टार्ट लेते हैं। टॉपिक हमारा स्ट्रक्चर एंड एक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो सबसे पहले अगर आप देखते हैं तो हार्ट कंप्लीटली है कवर्ड विद अ मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है जिसको कि पेरी कार्डियल मेम्ब्रेन कहते हैं। और इसके साथ अगर आप देखें तो इसके ऊपर जो है वो कंप्लीट कवर होती है आर्टरीज विच इज सप्लाई द ऑक्सीजन एंड द न्यूट्रिएंट टू द हार्ट, दैट इज कॉल्ड द coronary artery which is complete supply the oxygen and nutrient to the heart. हमने स्टार्ट लेना है सबसे पहले कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो बेटा बुक पे भी मैंने निशान लगाए हुए, वैसे भी मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें जो है हम अब बात करते हैं कि 4 चैम्बर है। तो सबसे पहले अगर आप देखते हैं तो लेफ्ट ऑट्रियम है, फिर उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल है, फिर हम कहते हैं यहाँ पे थर्ड वन इज़ अ राइट ऑट्रियम, और उसके बाद जो है यहाँ पे 4th नंबर पे जो आ जाता है वो यहाँ पे आ जाता है राइट वेंट्रिकल्स, ये 4 नंबर पे। ठीक है। तो उसके हवाले से हमने यहाँ पे बताना है कि क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले राइट ऑट्रियम, यहाँ पे अगर आप देखिए तो राइट ऑट्रियम पंप्स द ब्लड to the right ventricles, which is turn the blood into the pulmonary artery। कि अगर आप देखते हैं वो ब्लड पंप करता है पल्मोनरी आर्टरी की तरफ। एंड अगेन फ्रॉम द लंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड is the left atrium, oxygenated blood from the pulmonary vein, oxygenated blood uh, uh, comes from the pulmonary vein into the left atrium, then left ventricles, and which is turn the pump into the aorta and main with the help of the aorta wall. So this type of the circulation that is called the systematic circulation. And fourth chamber is complete separate from the membrane, so that is called the septa or the septum. Both walls are present inside the auricles or the ventricles. Two valve are present inside the arterioventricular wall, so that is called the Bicus wall, and it also tricus wall is also present inside the the body of this valve or heart structure. So which is incoming blood and outcoming blood away from the body or collect the body. So both auricles or the ventricles, they are involved for this process and pumping the blood to every part of the body. This septum or the membrane septum or the septa just like a flap like structure or the cup like structure, एक पर्दे की तरह से होता है। इसका जो मकसद है वो है कि no mixing of the blood, deoxygenated or the oxygenated blood, no mixing due to the presence of the flap, and they prevent a backward flow of the blood from ventricle to the aorta. And so the one side pushing the blood to the right atrium to the right ventricle, then other one is supplied to the blood with left atrium or the left ventricle with the single circulation or the contact with the great force, and they have to push the blood into the lungs. And so this type of the circulation, so that is called the pulmonary circulation. And other one is a systematic circulation. So all the parts supply the blood with the help of left atrium to the left ventricle to the specific area of the body. So
this type of circulation start from the left auricle to the left ventricles to the different part of the body, such as supply the blood to the kidney from the main aorta, and so supply the kidney, so that is called the renal artery, and supply the blood to the digestive system, mesentery artery, and supply the blood to the different part of the body, such as digestive tract with the help of the mesentery artery, or we can say from give rise to the main dorsal aorta. Oxygenated blood, deoxygenated blood collect from the superior vena cava, upper region, and the inferior vena cava to the lower region. Head, neck, and the shoulder so carry the deoxygenated blood, then enter into the right atrium and the right ventricles, and the lower portion, just like we can say, or start from the blood collecting from the hind limb and iliac veins and to the lower portion or the leg, and collect the blood, then enter into the right ventricles and right auricles. So this type of the movement, so that is called the systematic circulation. So heart is ventricle contract, so this type of situation, so that is called the ventricle diastolic or systolic formation, relaxation, or the mixing of the ventricle, but no mixing of the ventricle. So this process, that is called the systematic. This period of the ventricular contraction, so that is called the systole, and their relaxation of the ventricle, so that is called the diastole. ये बेटा कंप्लीट हो गया। बेटा इससे रिलेटेड एक वीडियो है जो कि बहुत इजी है, आपको समझ में आ जाएगा। जो ब्लू में है अगर आप देखते हैं तो वो राइट ऑट्रियम का है, रेड में अगर आप देखते हैं तो लेफ्ट वेंट्रिकल का है, और एक साइड से वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक साइड से जा रहा है। जो बाय कस्प वॉल है वो उसने बताया, दो जस्ट लाइक कप शेप और बॉल लाइक स्ट्रक्चर है। इसी तरह से वीडियो में आप देखेंगे तो वो ट्राइकस बताया हुआ है, वो भी इस तरह से बॉल लाइक स्ट्रक्चर है। एक साइड से आ रहा है ब्लड, एक साइड से जा रहा है, यूनी डायरेक्शन फॉर्म में, एक सिस्टमेटिक फॉर्म में है। और उसके बाद अगर आप देखते हैं तो ये वीडियो जो है ना आपको सारा कुछ जो है वो एक्सप्लेन कर देगी कि मिस ने जो बताया वो वाकई में इससे रिलेटेड है। The human heart has 4 chambers. The 2 upper chambers are the atria, and the 2 lower chambers are the ventricles. The interatrial septum separates the 2 atria, and the interventricular septum is the partition between the 2 ventricles. The right atrium and right ventricle are connected through a tricuspid valve. As the name suggests, it has 3 leaflets or cusps. On the other side, the left atrium and ventricle are connected through a bicuspid valve. The bicuspid valve is also called the mitral valve because of its resemblance to a bishop's 2-sided mitre or hat. The leaflets of these atrioventricular valves are connected to fibrous tissue called the chordae tendineae, which in turn are attached to papillary muscles. Contraction and relaxation of these muscles make the valves open and close. There are also valves at the opening of the pulmonary trunk and the aorta. These are called the pulmonary valve and the aortic valve, respectively. Because of their crescent moon shape, these 2 valves are also called semilunar valves. The characteristic double-up sound of the heartbeat is produced during the closing of the heart valves. The thickness of the walls of the 4 heart chambers varies with their functions. The walls of the atria are thinner than those of the ventricles, as the blood needs to be pumped into adjacent ventricles only. The left ventricle pumps blood a greater distance at higher pressure. Therefore, the wall of the left ventricle is thicker than that of the right ventricle. The sinoatrial node, atrioventricular node, bundle of HIS and Purkinje fibers represent the specialized cardiac tissue. These fibers are autoexcitable as they have the potential
to generate electrical activity without any external stimuli. This makes the heart beat continuously. उसके बाद अगर आप देखते हैं तो मैंने यहाँ पे बताना है आपको ब्लड कंपोजिशन के बारे में, और मैंने यहाँ बुक पे भी कि एक ह्यूमन जो बॉडी है उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं और कॉन्केव शेप होते हैं, बॉडी में ब्लड जो है 6 से 7 टाइम होता है और ये फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर ल्यूकोसाइट, एरिथ्रोसाइट्स और थिम्बोसाइट्स होते हैं और प्लाज्मा और डिफरेंट टाइप के एल्बुमिन प्रोटीन वगैरह मौजूद होते हैं। ब्लड सेल्स अगर आप देखते हैं तो रेड ब्लड सेल्स है, वाइट ब्लड सेल्स है, ये यहाँ पे मैं लिख रही हूँ वाइट जो ब्लड सेल्स है। और उसके बाद अगर आप देखते हैं तो हमारे पास ये दिए हुए स्ट्रक्चर, और लास्ट में अगर आप देखते हैं तो प्लेटलेट्स जिसको थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। ये जो अगर हम बात करते हैं एरिथ्रोसाइट्स, ये जो है जिसको रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं, ये 5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब की फॉर्म में ब्लड में मौजूद होते हैं। एंड टू कंप्लीट प्राइमरी फंक्शन टू एरिथ्रोसाइट्स इज टू ट्रांसपोर्ट द गैसेस and which is contain the hemoglobin pigment from the respiratory region and from the lungs and supply to every part of the elimination of the carbon dioxide. White blood cells is 4 type: eosine, neutrophils, lymphocyte or basophil, defending of our cells to complete engulf and destroy the bacteria or the germs. ये पूरी जो बॉडी उसके अंदर जो है जर्म्स है उनको ख़त्म कर देते हैं। ये इसकी जो तादाद अगर आप देखते हैं तो वो हमारे पास 5000 से 7000 मिलीमीटर क्यूब होती है। लास्ट में आ जाता है प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। इनको अगर आप देखते हैं फ्रेगमेंट की फॉर्म में होते हैं और इसका नंबर जो है वो ब्लड के अंदर 150,000 से 350,000 1 मिलीमीटर और द सेंटीमीटर ब्लड होता है। प्ले इंपॉर्टेंट रोल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग विच इज एसेंशियल फॉर इट। बेटा ये मैंने आपको सारा कुछ दे दिया है, इसको पढ़ लेना, इसको देख लेना। और इसी से रिलेटेड मैं आपको एक जो है वो सवाल दे देती हूँ, उसको ज़रा देख लें अच्छी तरीके से। और इसको जो है हाँ, इसमें अगर आप देखते हैं तो असाइनमेंट दे रही हूँ और ये बेटा आपने करना है प्लीज़। जब आप आए हैं तो आपने कुछ ना कुछ तो करना है, अपनी जो लाइफ है उसको ज़ाया मत करें। ये बहुत अच्छी एक अचीवमेंट है, एक स्ट्रगल है कि आपको जो है वो ऑनलाइन जो है वो पढ़ाया जा रहा है और आपने पढ़ना है। एक सवाल मैं आपको सिर्फ दे रही हूँ, ये है कि जो है एक्सप्लेन structure of human heart. Explain structure of the human heart with the help of diagram जो मैंने आपको बनाई थी अभी आप देख लें। इससे रिलेटेड जो है ना वीडियो भी है और उसमें अगर आप देखते हैं तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आके आप और आपने जो है इसको जो है रिलेटिव वीडियो जो है वो पहले भी कभी देखी होगी, अभी मैंने आपको इसमें भी डाली है, तो आप इसको देख लें किस तरह से ऑरिकल्स और वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे हैं। उसी से रिलेटेड असाइनमेंट है जो कि आप इजीली इसको कर सकते हैं और व्हाट्सएप ज्वाइन करके मुझे जो है वो भेज सकते हैं और कुछ समझ में ना आए तो पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू बच्चों।